Yo, it's your poker guy, and I'm back with another podcast. And this time I have with me winner of the Endboss with a massive payout, someone who's been a sports enthusiast, cricketer रह चुके मुझे अभी पता चला, and I've just seen him crush on the poker fells, studies a lot, fitness पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. I'm excited to talk to Pratik Manjrekar, originally Mumbai lad, now based out of Goa. So what's up, Pratik? How are you, man? Thank you so much. What's up, man? Thank you, man. Thank you, man. Thank you for having me, bro. I'm quite excited actually. When I spoke to him also, मजा आया था कि बात करके लगा था कि यार it'll be a sick podcast और अभी हम लोग 15-20 मिनट से बातें कर रहे हैं तो it'll be fun to actually discuss this. सही होने वाला है. क्या बोल रहे हो प्रतीक? How's Goa treating you, man? गोवा कैसा चल रहा है? Goa has been treating me great, man. Like life has changed in Goa for me. I've been living here, I think almost 19 months. About 19 months, almost 2 years now. And bro, life has changed, man. Goa has like taught me a lot, like from having no money to pay rent, to now being comfortable and, and lots of self growth has happened because, like I'm living alone. Like I'm not living alone. I share a house with someone. But yeah, there are responsibilities, right? There's rent to pay. There's salaries to pay. There's खुद के अय्याशियों के खर्चे और खुद के खर्चे. So yeah, bro, it's been a massive game changer because when I came into Goa, like I was scared, I was nervous, taking up poker professionally. I just took up poker professionally like 6 months before that, 7 months before that, with no literal money, and then I got staked. So because I got staked, I could make that decision because now buy-ins were no more attention for me. Right. So I decided, okay, let's give life a shot, So yeah, man, like I came into Goa with literally 1 month's rent money and like borrowed money from my parents to pay the deposit and stuff like that. Bro, here I am, man. जो तो अभी तो जो हुआ है वो डिस्कस करेंगे. Nice, we've just got back after a half-minute break. थोड़ा camera angles have changed, but Pratik ka story is interesting. So 2 years ago, coming to Goa, about 19 months ago, only 6 months into your poker journey, भाई. And वो story है कि मैं गांव से घर से खाली 10 रुपए की नोट लेके आया था. And वो बंदे ने and very interesting past also. So Pratik, उसके ऊपर बात करते हैं. मुंबई से you were playing cricket for Mumbai, right? And like a state के लिए खेल रहे थे. You was playing under 19s and under 25s and all. And very good. ऐसा नहीं है जो अपन सब टर्फ पे खेलते हैं वैसे ही नहीं. He was actually playing and was going to get represented, like was auditioning everywhere, getting into selections. So that was a part of his life. And then you had some this thing there, a bad experience there which did not go through. उसके बाद how did the journey into poker happen? Okay, उसके बारे में can we talk? So basically, there wasn't, the experience wasn't bad, but it was just like the sports politics, right? Like that's what got to me, right? Because I felt like I wasn't getting what I deserve, entitlement fee, right? Like as we talk in poker, right? So entitlement built ho gaya basically, let's put it up in those words. ठीक है. Right? And and then basically I always played poker. I was introduced to poker as a 16-year-old kid on like Zynga poker, right? Like Perfect. as mostly, like how most of the population has been introduced to the game, right? From there, I started playing Zynga poker, and then I found out that there is pokerstars.com where you can play online, right? So I started to figure out to play online. अच्छा ऑनलाइन ही चालू कर दिया आपने. अच्छा नॉट इवन प्लेइंग ऑफलाइन. ब्रो I didn't know shit about the game. Okay, this is let's say 2 months into playing Zynga poker, I found out pokerstars.com है भाई, मतलब real money अभी पैसे से खेलते हैं. नाइस. और ब्रो तभी मैं क्रिकेट खेल रहा था प्रोफेशनली ब्रो, तो पैसे आ रहे थे. ब्रो मेरे को महीने का as a 14-year-old kid, I started earning like 15,000, 18,000 rupees a month. Wow. I can imagine. So at that point in time, there was a lot of money for me. मतलब मैंने बचपन में bro खुद के कच्चे भी खुद से खरीदे, right? Like I never had to ask my parents to buy anything because it was my money. Correct. Right? So, I mean, in a way, like I fucked up in a lot of ways because of that. But yeah, man, that's like a learning experience, right? Yeah. So
I had money, so then I realized, bro, why do I have to play Zynga poker? बहन तो असली पैसा डाल के सही खेलता है, हूँ ना. सही है, सही है. फिर मैंने pokerstars.com पे गया. फिर मैंने I tried to find out how Indians can deposit money, right? So that time it still exists, but I don't think Indians can use it anymore. But that time there was this thing called net teller, right? Like Okay. so luckily for some reason मेरा एक बैंक का ट्रांजैक्शन नेट टेलर से हो गया तभी 2,000 रुपए का. तो पैसा आ गया राइट. था उधर, हाँ. मतलब नेट टेलर में चले गया. मैंने ऐसे ट्राई किया ऐसे फ्लूक में कार्ड वार्ड के डिटेल्स डाले 2,000 रुपए ऐसे एक टेस्टर के लिए मैंने जगह डाल देता हूँ 2,000 देखता हूँ होता है क्या. ब्रो चले गए 2,000 रुपए वहां पे. हाँ, वो चले गए मतलब भाई अभी मैंने नैया में मतलब मैंने कूदी आ मार गया दी हो, है. तो हाँ. समझ रहे हो मतलब मैं कूद गया हूँ ब्रो. बट आपके वॉलेट से 2000 गए बाद में, कि वॉलेट में रहे 2000 बाद नहीं में? ब्रो वॉलेट से 2,000 नहीं उसके बाद नेट टेलर के वॉलेट में बहुत 2,000 के ट्रांजैक्शन हुए ब्रो. हाँ. हाँ, बहुत ट्रांजैक्शन हुए ब्रो. मैं तो मतलब टॉप खेल रहा था pokerstars.com पे और मैंने पहले 2 घंटे में ही 2,000 रुपए पूरा. टूर्नामेंट्स में हारा ब्रो. मैं लिटरली एस डूस ऑफ 100 बिग ब्लाइंड कॉल ऑफ कर रहा हूँ. अरे क्यों समझ नहीं. लो, मतलब वो टाइप. हाँ मतलब मैं कुछ हाँ. भी कर रहा हूँ ब्रो. राइट. देन ब्रो हारते 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 वो 50,000 हार गया एक हफ्ते में. समझ रहे श्योर, हो. फिर श्योर. थोड़ा झटका लगा कि भाई 50,000 हार गए हो भाई मतलब क्या हो रहा है. हाँ, हाँ, ठीक है हाँ. ब्रो. उसके बाद मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया एंड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम. राइट. लाइक आई वाज श्योर. प्लेइंग क्रिकेट फुल एंड टाइम. इट अफेक्ट्स यू मेंटली आल्सो, आई एम श्योर. हाँ. Yeah, 100%, bro. Like when I saw my bank balance get from like 1,20,000 to like 50,000 less, it started to like fucking या. like हाँ, give me क्या हो feeling गया भाई, mad. हाँ. Oh, yeah, like what the hell just went happened, right? In like a matter of like 4 days, 5 days, right? Something like that. Then, bro, like I just decided to like stop playing. I was like, भाई थोड़ा chill कर, हाँ. relax कर. एंड या ब्रो देन एक हफ्ते के बाद मैंने फिर से पैसे डालने की कोशिश की और फिर मेरा कार्ड wasn't accepting net teller bro. चलो, थैंक गॉड. हाँ. हाँ राइट. थैंक गॉड ब्रो. लेकिन हम है बहुत अय्याज भाई. हमने फोरम ढूंढ लिया भाई ऑनलाइन. अच्छा, अच्छा, अच्छा. बॉम्बे में लोग खेल रहे हो और बॉम्बे में लोगों के पास डॉलर्स है बेचने के लिए. तो ओ. pokerstars.com पे P2P था ब्रो. तो P2P कर रहे हो और वो डॉलर के रेट पे उनसे डॉलर खरीद रहे हो बेसिकली. तो ब्रो मैंने अच्छा. वैसे करके ढूंढ लिए. समझ रहे हो. तो अभी तो नाइस. ब्रो और मतलब और डूब अभी गया तो मैं. अनलिमिटेड, हाँ, समझ गया. हाँ. अनलिमिटेड सप्लाई ब्रो. उधारी चढ़ गई. समझ रहे हो. बैड डेट्स हो गए. लाइक श्योर. देन I found some home games. I started to like, bro, I got into this full like rash fucking poker scene, गॉट like इट, I got गॉट इट. fucked basically left, right, and center. And by the time I was completely like bombarded by poker, I got into bad debts where people reached my house and stuff like that and all. I was like around 21 by then. श्योर. So all this happened in the last like 4 years, 5 years, and then bro, once all this happened, I decided to like stop playing poker completely because people reached home, man. Like I didn't have enough money to pay. My parents helped me like clear my debts. So this So game has shown you that side of the life as well. मतलब 21 पे yeah, आपने देखा yeah. हुआ है cause of poker. Yeah, Okay, bro. okay. Yeah. So this happened, and then I just stopped playing poker, bro. Like I was like, I'm done. Like हाँ. I'm a DJ, right? I have problems, I have issues. This is not cool. Like this is just not cool. Like people can't be reaching my house, bro. Like Correct. उसके ऊपर से bro तभी मैं नशे करने लग गया था. तो like things could have gone really south for me, man. Like and Sure. I didn't want my parents or my house to be under any sort of like wrong influence that there is someone who's living in this house who has serious issues and Sure. people are in his house to collect money and like the cops are coming to his house and what's going on, right? So yeah bro, like all this shit happened and then I was just like no more poker, man. Like I'm just going to enjoy my life. I'll go party, get high, do whatever I want, but no more gambling. Sure. Like no more gambling, right? Like that time it was no more gambling. Correct, So correct, correct. yeah man, like then I just stopped playing poker. Then at like 26 मेरे को थोड़ी खुजली आ गई तो मैं पोकर स्टार्स पे मेरा अकाउंट फिर से मेरा अभी इंडिया हो गया था. मैंने तभी इंडिया देख लिया था ब्रो. हाँ, हाँ. वाह पोकर स्टार इंडिया आ गया भाई. अब तो मैं बिंदास 500 रुपए डाल के खेल सकता हूँ. Correct, correct. फिर ब्रो फिर मैंने खेलना चालू किया और फिर तभी मेरे को सॉडी केआरडी की स्ट्रीम दिखी ब्रो. Nice. हाँ तो his stream has changed my thought process of poker. Like it Sure. started from there. Like it Wow. literally started That one from there. stream, Like if his, it's created, yeah, if you're yeah, crediting it yeah. today, Like his मतलब उसका stream, impact होगा. yeah, bro. Like his stream made me realize that like this game can be studied and this game can be. There is a way to play this game. There is
he spoke about having 100 buy-in bankroll Correct. management role that time. I didn't know about it. Sure. Right? When I heard all of that, I was like, oh wow, man. And today when you talk about bankroll management, people are saying you need at least 1,000 buy-ins. Right? Like Correct. I'm not, Correct. if I on Indian side, if you want to play, my personal opinion in today's time is that you should have at least 300 to 400 buy-ins, not 100. And this You is know, for because tournaments. For this tournaments. is for tournaments, yeah. Like this is what my, like I don't know if it's too conservative or what, but that's my thought process. You know, like now I Conservative is don't. better. I think it's Yeah, only yeah, good. yeah, There's way nothing bad better. about it. Yeah, हाँ. yeah, yeah, yeah. So yeah, bro, like तभी फिर मेरे को ये सब सुनने में आया, उसकी स्ट्रीम में देखने आया. I saw how he was playing. I tried to copy his game style, you know, like all of that happened. I saw him मैंने उसकी स्ट्रीम देखी तो he spoke about PT4. तो मैंने इमीडिएटली PT4 ले लिया ब्रो तभी, बिकॉज आई वाज Sure. लाइक चलो कुछ तो लेते हैं, मतलब अभी आदमी इतना बता रहा है, मतलब ना कुछ तो ट्राई करते हैं, राइट? लाइक लेट्स हाँ. ट्राई, लाइक यू नो. तो मैंने PT4 खरीद लिया तभी ब्रो, यू नो, बिकॉज आई वाज लाइक चलो एटलीस्ट मेरे को मेरा फिर वो सब समझ में डेटा आएगा. वेटा, हाँ, हाँ, हाँ. सब हैंड हाँ. कैसे खेल रहा हो देख सकता हो. तो वो सब सोच के मैंने PT4 में इन्वेस्ट कर लिया. सॉर्ट And ऑर्डर this का is था 6 months into playing poker again seriously. जब आप वापस 6 months into poker आ चुके नहीं, थे. आई वॉजेंट प्लेइंग सीरियसली ब्रो. मैंने तो ऐसे मतलब चालू कर अच्छा, दिया था अच्छा, अच्छा. खेलना. मतलब मैं तो ऐसे, इट वॉजेंट सीरियस एंड ऑल. आई वाज जस्ट लाइक ब्रो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अगेन. समझ गया, समझ वॉजेंट गया. तो सीरियस, अभी बट ढंग हाँ से like खेलता हूँ. ढंग से खेलता दो हूँ. तीन दिन में एक बार खेलूंगा. लेकिन जब खेलना है ब्रो, तो अभी अगर ये आदमी इतना बता रहा है कि ये गेम ढंग से खेला जा सकता है, तो भाई हाँ. ढंग से खेलना भाई. मतलब पैसे है हाँ. ठीक है, लेकिन फिर पैसे वाइजली यूज कर Sure. ना. अगर तेरे पास 10,000 रुपए है तो भाई 100 रुपए के गेम खेल, चुपचाप औकात में रह, 100 रुपए के करेक्ट गेम है. खेल. यू नो, और ब्रो अगर कुछ नसीब में चला दिया सैटेलाइट करके, तू जीत गया, पैसे जीत गया. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड ब्रो. लाइक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी. राइट? या. आई वाज जस्ट प्लेइंग these 100 rupee. There used to be like 3 or 4 100 rupee tournaments on Poker Stars that time, bro. And there used to be हाँ. this 880 afternoon on Stars. Bro, हाँ. I used to play that tournament, and that this is when I used to only play on Poker Stars, bro. तब ये हाँ. बार तो मैंने बाजी किया और मेरे को पता ही नहीं था. ठीक करेक्ट, है, मैं करेक्ट. पोकर स्टार्स पे खेल रहा था. I was like that naive, like to this whole industry, right? श्योर. Bro, I used to play afternoon on Stars. It was a 880, I think some 1 lakh, 2 lakh वाह. हाँ, guarantee. हाँ. या. There was a 550 evening knockout, which was a 1 lakh करेक्ट, guarantee. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. या. Right? And then bro, रात की जो 11 बजे की होती थी ना बाउंटी टूर्नामेंट, वो करेक्ट. 750, right? I वो used भी to play. 880 वाली थी. आई थिंक 880 वाली हाँ, थी ना. 880. Bro, when I हाँ. played it, I think it was 770 or something. अच्छा, Like फिर वो अच्छा. 880 हुई, फिर वो 990 हुई, फिर 880 हुई. हाँ. तो bro, I played all these tournaments and made some money. शिप की मैंने एक बार आफ्टरनून ऑन स्टार्स, तो थोड़े 40,000 आ गए. उधर हाँ. कुछ फ्लोट आ गए तो उधर 15-20,000 आ गए. तो ब्रो लाइक दैट करके थोड़ा हो गया. और फिर ब्रो एक विंटर सीरीज है, और विंटर सीरीज में मेरे सैंटा क्लॉज आ गए भाई. समझ रहे हो? तो सैंटा क्लॉज आ गए ब्रो. विंटर सीरीज हाई रोलर मैंने सैटेलाइट की. आई केम लाइक 12th in that for 50,000 rupees. That was a lot for वाह. me that time. या, You know, या. इवन I टुडे. sat into the 5,500 and I came third for like 1,80,000. So bro, वाह. फिर और ये सब मतलब भाई आप वो, प्रोफेशनली गए नहीं हो अभी तक कुछ. नहीं ब्रो. मेरे को सिर्फ पता है कि यू कैन प्ले दिस गेम प्रोफेशनली नाउ. हाँ. आई मजा जस्ट आया. नो दिस गेम कैन बी स्टडीड नाउ, एंड हाँ. देयर इज अ वे टू प्ले. तो ब्रो बिकॉज ऑफ सॉडी मैं उसकी स्ट्रीम, वो लिटरली आई थिंक वो रोज स्ट्रीम करता था वो टाइम पे ब्रो. हाँ. यू नो, पोकर स्टार्स के लिए स्ट्रीम करता था ना. हाँ. yeah, he was PokerStars Pro that time. So he and करेक्ट. Muskan used to keep streaming, bro. या. So, you know, like Muskan and like they used to keep. Adi was also there that time with PokerStars, but I don't think like Adi ever streamed. Adi did like 1 or 2 cash streams. That's what he did for PokerStars. He Sure. never streamed any tournaments. So yeah, bro, these streams I saw, you know, I used to keep watching Saudi stream because and then Saudi used to even study. He used to have like once a week, he used to have a study stream. You know, so because bro, फिर वो बहुत सीखने को मिल गया मेरे को वहां पे उसके स्ट्रीम में. फिर मैंने बोला ब्रो अब मतलब अपना ठीक है, मतलब खेलना है तो खेल, लेकिन ब्रो ये गेम में फालतूगिरी मत कर. अगर फालतूगिरी करेगा तो भाई मतलब अभी ब्रो पीपल हैव गॉटन वे बेटर. एवरीवन इज स्टडीइंग द गेम एंड लोग तेरे को लूट डालेंगे. करेक्ट, मतलब ना, करेक्ट. मतलब खत्म हो जाएगा तू ब्रो. मतलब फालतूगिरी मत कर, चुपचाप औकात में खेल और मजे कर और एंजॉय कर. कमा. हाँ. या यू नो, एंड मेक मनी. एंड ब्रो मेरा सीधा सा हिसाब था, पोकर में पैसे तब भी बनाओ और अय्याशी में उड़ाओ. मेरा हाँ. कुछ ये नहीं था कि बैंकरोल, क्योंकि आई डिडंट वांट टू प्ले प्रोफेशनली दैट टाइम, बट आई वांटेड टू प्ले द गेम वेल. समझ You know, गया, समझ गया. खेलना है, जीतना है और हाँ, फिर बाद में उड़ा देना. यू वांट टू एंजॉय योर दिस थिंग. हाँ, सिंपल. और ये टाइम पे फैमिली स्टिल नॉट पुटिंग एनी प्रेशर कि भाई क्या कर रहा है, वापस चालू कर रहा है. Bro, my family has like my family has honestly, bro. I'm not like, I don't know whether I should be very proud of saying this, but bro, my family has never really
been able to put pressure on me, bro, because I've always been a very independent person, man. Sure. Like growing up, like from the age of 13, 14, I started earning money, Correct. right? Bro, I've been always been very independent in my life. I've never had to depend on them for finances. You know, like I used to, bro, मैं हर महीने phone change करता था as a 16, 17-year-old kid. You know, Wow. because like I had money that time, and that time phones were like all cool. You know, so Correct. 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 me being a 16-year-old kid in college playing for Bombay cricket, bro. I was an art student, so I had like Top I of the was world. surrounded by girls. You know, I was Uh, surrounded by girls, bro. So you know, like for me, bro, every month I'm like, you know, buying a new phone, bro, just to show off. You know correct. what I Correct. mean? Like that's how I've like grown up, bro. So from there, what life has like, you know, shown me and taught me, and you know how life has grounded me, all I can say is I'm just grateful for that. You know, like this game has like taught me so much, bro. Like so much. It's just like unbelievable. Like the amount of things. If I think from the age of 16 till date, the amount of things this game, how this game has impacted my life, bro, is just like crazy. You know, Wow. from like having bad debts to people reaching my house to now reaching a point where at one ask I'm like, you know, helping my friends with money. You know what I mean? Because that's one of my things. Like I've in the last like 2 years, ever since I've taken poker professionally, I am so grateful because from this community, bro, from Poker Bootcamp India, I have like 2, 3 friends. I've made real friends who've like really stood by me, who've like really, you know, helped me financially also, you know, like they've never उन लोग ने मेरे को एक, you know, फोन कॉल या एक मैसेज पे रिप्लाई किए बिना पहले पैसे भेज दिए ब्रो, और फिर रिप्लाई की कि भाई तेरे को पैसे भेज दिए. You Oh, know, like, wow. you know, like, bro, when these things have happened to me, it is only fair that I do my bit and, you know, give it back to this universe, you know, whoever needs the help. So I have friends, you know, friends like, you know, my room partner right now is going through a massive downswing, you know, like a massive downswing, bro. Like, it's not even funny. And like, he's not made money from this game for a very long time, you Sure. know, and he still, you know, is trying to push himself, you know, do his thing. So, bro, the least I can do is support him in whatever way I can, right? Sure. So that's what I'm doing, you know, and that's what this game has like taught me, right, over the years, you know, and this is where I am today, you know. It's like it's amazing. Nice, nice, man. I see so much passion and this thing about the thing in the way you talk about the sport and what it's done for you. So, बहुत interesting है. We want to bring that out. Uh, सही है यार. If you like, you talk about it, what has it done for you? Poker, like if you can sum it up in points, कि क्या है? What does poker mean to you? कि क्या हुआ है Bro, poker के कारण? poker has got me back to my original self of what I've always been mentally and physically trained to do in my life, and that is to play a fucking sport. Yeah, You yeah. You know what said I that. mean? Yeah, yeah, yeah. To be a disciplined human being. That's what my life has always been because I have played poker. Bro, my life used to be waking up at 5 in the morning and going to sleep at 9:30 in the night. I've done Because that for, cricket खेलते थे. Because cricket yeah, खेलते थे. bro, I have done that for almost Eh, the age of like 12 to the age of like, you know, 21, you know, sure. 22. Like, bro, I've like, that's who I am. Yeah. You know, I am not this person who likes to go and socialize and go and have a, bro, I don't drink alcohol. You know, I Oh, have some other habits, but that is yeah. because, you there are personal reasons to it, you know, like but otherwise, bro, I'm a very introvert. I'm not a very social person. I don't go out. Like I've been living in Goa, I've never gone for parties. You know, once in a while when सीरीज के टाइम पे दोस्त लोग आते हैं तो हम लोग ऐसे बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैं ब्रो 1 घंटे का छोड़ के उन लोग घर आ जाता हूँ समझा. क्योंकि ब्रो that's just not me, you know. And poker has basically helped me get myself back in terms of my discipline, in terms of my competitiveness of being a competitive sports person all my life, right? Like, yeah, sure, Yeah. I played team sport all my life, but I played a competitive sport, and this Yeah. is also a competitive sport, you know. And when I decided to take up poker professionally, I just told myself that, hey, man, this is not going to be easy. You're starting, and मैंने जब चालू किया था तो मैंने 15,000 के बैंकरोल से चालू किया था, राइट? तो 50,000 का बैंकरोल था, 35,000, 30,000 या 35,000 रुपए टीबीसीए ज्वाइन करके एचपीए बैच में इन्वेस्ट कर लिए थे, तो बचे थे वही बैंक रोल था, राइट? सो और बैंकरोल क्या मतलब वही पैसे थे. दैट्स ऑल. ऐसे हाँ, तभी कुछ दैट्स बैंकरोल ऑल. देयर पता भी वाज नहीं नो, था. या पैसा ही था या बस. यही टाइम था. आई वाज लिविंग इन बॉम्बे, सो देयर वाज नो रेंट टू पे, नथिंग. सो यू नो वही 15,000 थे, वही था जो भी था मेरा बैंक बैंक
मतलब लाइफ वो बैलेंस था, हाँ, वही मेरा बेसिकली तो, बैलेंस था, हाँ करेक्ट. right. So basically, yeah, bro. So this game has just got me back to my old self, and I'm forever grateful, man, because this is who I want to be. You know, I want to have a disciplined life. I want to wake up to being uh And having a goal, I guess. मतलब वो जो आपको पता है आप क्या कर रहे हो, yeah. waking up to Not having randomly working. targets, Yeah, having small, yeah, small targets of the day that I need to complete. And if I don't complete these targets, bro, every night before I go to sleep, I don't like myself. That's who I am. I am also a perfectionist, right? But I know that it is not easy to reach perfection. I am also aware of that, but I am also aware of the fact that I'm a perfectionist. Right you now, want what to do I achieve, try for it, you want to go yeah, for it I at want least. to try. And if I don't try, then that hurts me, you know. Correct. So, and to be very honest, bro, my daily goals are so simple that I don't need to try. If I do it, I'm going to achieve it. समझ गया, You know, करने बैठो तो हो जाएगा, हाँ. हाँ, like simple things, bro. 2 घंटा पढ़ाई कर भाई. हाँ, Simple thing, right? Go and work out. Do your हाँ, workout. You know, eat your fucking meals on time the way they have to be eaten. Okay, not on time because of our whole work schedule, correct. but eat your meals. Don't eat sugar. Control on your eating out habits. Bro, if I Nice. don't do these small, small things in my day-to-day life, I can't sleep peacefully at night, man, because that's who I am. You know, Correct. I need to be a disciplined person, irrespective of whether I win 10 more end bosses. You know, I don't care. Like, that doesn't matter to me because money is just a byproduct of all the work that I'm putting in, right? Like, everything is actually related to my own self growth and my happiness and my peace, right? Money is just something that will come from the outside to me when I do these things, because that's like a gift that, you know, mankind has given to all of us, right? Correct. Money. राइट, तो मेहनत करो तो पैसे मिलेंगे ब्रो. मैं तो लिटरली, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ ब्रो. आपने एंड बॉस के पहले, सॉरी यू सेइंग समथिंग. नहीं नहीं, आप पैसे की बात कर रहे थे. I was like so many years you worked in farming, right, where you said the money was not even the Yeah, highest, but yeah, आपको yeah, करना अच्छा yeah. लग रहा था तो आप कर रहे थे. So it was not that money was driving you. So yeah, we spoke this off record, but yeah, ये Yeah. था. But anyway, coming back, yeah, end boss का आप बता रहे थे क्या? Yeah, so bro, like even for me, like I never expected this, you know, like Yeah, the day this happened, the night this happened on Monday morning, like अनीश की तो ग्राइंड जल्दी खत्म हो गई थी 11 बजे के करीब. तो अनीश तो रात को बाहर चले गया था. ठीक है, मैं बैठ के ग्राइंड कर रहा था ब्रो. सुबह को जब वो लड़का वापस आया, लाइक ही इज like he kept on telling me that, bro, if there's anyone who deserves this, it's you. And bro, the only thing I told him is that no, bro, like this is wrong. Like there's nothing, like I don't think I deserve this, bro. Like for me, this is just like, I don't know, दे दिया मेरे को तो दे दिया, but I personally don't feel like I deserve this. There are many, many more people out there who are working way harder than me, who are way more disciplined than me. They deserve it. You sure. know, but this game that we play is so brutal that it doesn't care who deserves it. You know, it'll just give. Yeah. You know, it'll just give. मन Yeah. किया आज इसको जिताना है भाई, जिता दो. मतलब I'm just talking hypothetical, right? Correct, I'm not correct, correct. हाँ, I like, understand. I'm just trying Yeah, to not like put single like, targeting. I understand. Yeah, yeah, मतलब yeah, किसका yeah, भी हो yeah. सकता है. हाँ, मतलब it's Yeah, not you know, like like, so deserving पे नहीं होता exactly, है. bro. So I mean, I personally feel that Gaurav Sood deserves to win all the tournaments he plays. True. You know what I mean? That's what Yeah, I yeah, think yeah, he yeah, deserves. yeah, yeah. You know, like I think my really close friend, my ex-coach Shardul Parthasarathi, I feel like he should always be winning. You Yeah, know what I mean? Like I feel all my close friends always deserve to win. But no, that's not true, man. Like this game is sure. brutal, right? It's going to like, you know, show you everything. And that's Correct. that's the beauty of this game, is what I see. Nice, nice. Absolutely, absolutely, man. I love the answers. Want to talk about you're wearing your PBCI t-shirt as well. And Yeah. yeah, that's Poker Bootcamp. But now I'm also a camper, but online Yeah, camper. yeah, 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 yeah. yeah, So fair enough. Shout out to PBCI for that. But ये yeah. पूछना है कि आपने 50,000 था तो आपने ये आफ्टर दैट पीरियड था जब आपने कुछ 180 कमा लिया, जीत गए थे, थोड़ा उड़ा, सब कुछ उड़ा दिया, ये कर दिया, 50,000 का बैलेंस था और आपने तब डिसाइड किया 35K टू इन्वेस्ट ऑन अ कोचिंग. इट टेक्स अ टोल, राइट? बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज आप गलत पोजीशंस में भी स्टेप्स अच्छे ले रहे हो. जैसे आपने PT4 खरीद लिया था. लाइक यू आर ओके टू Right. इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ और इन्वेस्ट इन Yeah, डूइंग द yeah, राइट थिंग. सो yeah, आई जस्ट नोटिस yeah. दैट. तो कैसे वो डिसीजन हुआ 50 में से 35 देने को अग्री किया? एंड देन आई वांट टू So, अंडरस्टैंड. या सॉरी, गो ऑन. या. no, no, no. Go ahead, bro. And then Go I ahead. want to know the role of PBCI in the early days. Like you spoke of Tanay and you, I just want to know about PBCI, how it happened. And then I Yeah, want to discuss yeah, life after PBCI and the people of PBCI after that. yeah, So yeah, starting yeah. कैसे हुआ? Yeah. So basically, bro,
जब मैं ये फोकस पे ये सब जीता ना, हाई रोलर हाँ में 12th आया 50K, वो थर्ड आया 170K कुछ, तो ब्रो हाँ ये सब पैसे जीतने के बाद ना, मैं ये सब पैसे मैं लॉकडाउन के पहले जीता था। करेक्ट। ठीक है, अभी लॉकडाउन के पहले मैं ये सब पैसे जीता हूँ ब्रो, मैंने पार्टी करने चालू उड़ा कर दिया, दी, समझ गया, हाँ मैंने समझ गया, उड़ा दिया पैसे समझ। उड़ा दिए। अभी हाँ पैसे करेक्ट। उड़ाने के बाद ब्रो, जस्ट लॉकडाउन के पहले, ठीक हाँ है, माय फ्रेंड हु हैज अ लैंड इन कोडी, ओके, हाँ told me that bro, my land is not, no one's been at the place, let's go and clean up the house and we'll come back in like 1 month. श्योर। हम वापस आ जाएंगे बॉम्बे, घर जाते हैं, थोड़ा लैंड वैंड साफ करते हैं, बिकॉज ब्रो ही जस्ट सेड गार्डन को थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ा घर को साफ करते हैं और आ जाते हैं, बिकॉज ब्रो ही, मैं आई डोंट नो इफ यू सीन माय इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, बट लाइक ब्रो, लाइक इट वाज अ वाइल्ड प्लेस, लिटरली वाइल्ड, देयर इज ओनली वन ओके। हाउस इन द जंगल, देयर इज नो हाँ फोन नेटवर्क, देयर इज नथिंग, देयर आर ओनली वाइल्ड एनिमल्स, एंड देयर इज हिज हाउस। अच्छा। ओके, ठीक है, देर इज नो नेटवर्क नथिंग, तो वंस यू गो देयर ब्रो, अगर आपको फोन पे घर वालों से बात करनी है, उसी खिड़की पे ना एक स्पॉट पे नेटवर्क आता है, वहां पे फोन रख के मम्मी से लाउड स्पीकर पे बात करो, हाँ गर्लफ्रेंड से लाउड स्पीकर पे बात करो, नो फोन सेक्स, नो नथिंग, नो नथिंग, जस्ट फकिंग सिंपल बातें, और भाई काम पे लगो। ठीक करेक्ट। है, तो ब्रो ये प्लान था 1 महीना जाने का। ठीक है, पैसे वैसे उड़ा दिए, पार्टी वार्टी कर दी, दोस्त ने बोला चल भाई जाते हैं, हाँ। घर वर साफ करके वापस आ जाते हैं। ब्रो हम वहां पहुंचे और लॉकडाउन अनाउंस हो गया। ओए होए होए हाँ। एंड अभी वेयर इज ब्रो दिस प्लेस, ये लॉकडाउन आपने जो प्लेस बोला वो किधर है? इन कोडाई कनाल ब्रो, इन कोडाई कनाल, तमिलनाडु। अच्छा अच्छा अच्छा, परफेक्ट हाँ। ओके, तो हम वहां पे पहुंचे और लॉकडाउन अनाउंस हो गया ब्रो। अब लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो आपको पता है, वंस लॉकडाउन वाज अनाउंस फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स नथिंग ओपनड अप, राइट, करेक्ट, एयरपोर्ट जहाँ एयरपोर्ट। हो वहाँ हो हाँ। क्या जहाँ वहाँ, तो हम जहाँ थे वहां रह गए ब्रो 9 महीने हाँ। के लिए। हाय ठीक है, और हाय। वो 9 महीने में सब रियलाइजेशन हुआ कि अब लॉजिस्टिकली और logically farming doesn't make sense, हाँ right? Like in that 9 months, all this happened, right? So we were over there for 9 months. We farmed, we sold vegetables, we had a ball. We both of us partied in the jungle. We got high, we danced. Just the two of us. We lived together for like 9 months. In वाह। the wild forest. Had a time of my life. Made a very special connection with him also as a friend. Got to know, learned a lot from him staying there. Like श्योर। with him staying over there, learned a lot because it's not easy, bro. If you आपको कुछ भी हो गया ना, अगर समझो आप वहां पे पहाड़ों पे उसके फार्म में काम कर रहे हो ना, और अगर समझो काम करते करते आपको सांप ने काट लिया ब्रो, आप मर रहे हो। ठीक हाँ है, और कहीं क्योंकि वो पहुंच नहीं आपको, पाओगे। हाँ कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे ब्रो। वहां उसके घर से अगर आपको उसकी गाड़ी तक पहुंचना है ना, तो आपको 50 मिनट चलना है अपहिल। ओहो हो ओके ठीक तो। है, अभी हाँ समझो ब्रो 50 मिनट चलना है अपहिल अकेले, अगर अभी किसी को कंधे पे लेके चलना है तो भाई मतलब 4 घंटा लगेगा। ठीक है, सही अभी है। ब्रो अगर तुमको रसल वाइपर काटेगा ना ब्रो, तुम 15 मिनट में मर जाओगे। ठीक करेक्ट है, करेक्ट सीधी सीधी करेक्ट। बात है। तो ब्रो आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बी अवेयर, बी श्योर। अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, बी अवेयर ऑफ, ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग, लाइक observe, I'm a very distracted person bro, like so he's like bro observe, देख क्या कर रहा है, if you're working with plants, look at them, look how they are reacting, remember how they were yesterday, so that if you see any change today, remember that there is a change, श्योर। why this change happened. So bro, I learned so much, in that 9 months from him, and I think that made me realize that I shouldn't, like I can't be farming, because this is good to have as a passion, this is not going to make me money. you करेक्ट। know I can invest 30 lakh rupees, buy a land for 15 lakh rupees, make a हाँ house in 15 lakh rupees, but उसके बाद ब्रो वो 30 लाख रुपए मेरे को वापस रिकवरी। बनाने के लिए हाँ हाँ जिंदगी में नहीं बना पाऊंगा खेती करके ब्रो। समझ गया समझ समझ रहे हो गया। जिंदगी में, मतलब, एंड ब्रो आई एम नॉट, लाइक माई फैमिली इज नॉट रिच, तो हाँ ऐसा नहीं है कि वो 30 लाख दे दिए मेरे को और पड़े हुए हैं हाँ 30 करोड़ हाँ। होंगे। अगर वो 30 लाख मेरे को फैमिली वालों ने दे दिए फार्म खरीद उनको रिटर्न खरीद, चाहिए, दे वांट या दे, हाँ इट्स नहीं ब्रो, इंपॉर्टेंट अगर मनी। ब्रो रिटर्न नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन ब्रो दैट 30 लाख देन इज गॉन, मतलब हाँ वो हाँ। खानदान के पैसे से खत्म हो गए 30 लाख रुपए ब्रो, समझ रहे करेक्ट हो, सिर्फ तीस करेक्ट लाख ही बचे खानदान के पास। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समझ रहे हो, तो ब्रो मैंने ये सब भी सोचा और मैंने बोला ब्रो ये सब मेरे नानाओं के पैसे है, मेरे दादाओं का पैसा, मैं कौन श्योर। हूँ भाई पैसे से अय्याश करेक्ट करने वाला, काम खरीदना, चुपचाप भाई अपनी जिंदगी खुद बना। करेक्ट। Right? That's when I realized, bro, forget it. Like, I love poker. That's when sitting in the jungle, I told my friend also that, bro, I'm going back and taking poker up professionally. Like, I want to give this a shot. I don't think वाह। farming is happening, because I've worked enough to understand the logistical part behind it. And it just doesn't work out. Like, I'm not going to make it's good for someone who has lots of money and family money and, can, like, spending 30 lakhs is not going to affect their bank account, श्योर। but bro, like for my family, like, if I save this 30 lakhs, 40 lakhs for them and let my parents have the money, it'll make a lot of difference. It'll give them a lot of security in their श्योर। old age, right? Like, and this is their, it's their parents' money.
राइट, लाइक हु एम आई? ठीक है, मतलब Correct. हाँ मैं ठीक है, मेरे दादा दादी थे जो भी थे, लेकिन दे आर दोज आर द दैट्स द रियल कनेक्शन, राइट? आई एम जस्ट लाइक अ ग्रैंडसन, you know what I mean? So that's where I decided that okay man, like it's time to step out of this dreamland, fairy tale land, and get to the reality, you know, like get to fucking reality and do whatever you want, but get to it. It's high time. And this is, bro, 3 years back. So I was like 30 years old that time, right? Like Sure. I'm 33 right now, right? I was 30 years old that time, and like kind of age also hit me. I started to realize that, you know, bank account is now zero. I'm getting canned everywhere. You know, like come on, it's time to now fill your bank Step up. account. Yeah, yeah, yeah. So that happened, bro, and that's when we walked out of there. Once things opened up, you know, we came out of there, and I had some money left, and I वो decided, yeah, 50,000 जो बचा था उससे basically. yeah. So yeah, bro. Then I decided, चलो भाई, जय माता दी, Yeah. जय माता दी, let's go भाई, पोकर. तो पीबी Yeah. से कैसे आया? पीबी से और तने से आपने बात की थी पहले? You spoken to हम्म. तने? तो ब्रो अभी ये पीबी से का भी बहुत ही अलग ही कनेक्शन है, ठीक है? अभी कनेक्शन पीबी से मेरा ऐसा है कि मैं 2012 में या 2011 में जब फर्स्ट आईपीसी हुआ था ना, तो हाँ. आई हैड वर्क फॉर पीटर. ओके, पीटर इज बेसिकली वन Oh, ऑफ yeah, yeah, I know. द, so I worked for Peter as a ground reporter because he was also running Gutshot that time, I think, if I'm not Sure. Yeah, mistaken. yeah. So he Yeah. used to basically sit on the desk and report Gutshot, and me and two, three other guys, we basically used to ground report. So that's Of when, the bro, offline events. of the offline events, Hey, yeah, sick and on, basically, man. Nice. yeah, and go and give hands to Peter, basically. And bro, when this happened is when I met Goendy, right? I हाँ. met Goendy at the casinos because he used to come and play, and that time Goendy had a broken leg. I remember he हाँ. had come with crouches, bro, broken leg. आया भाई बंदा आके टूर्नामेंट शिप कर गया है, सेकंड कर गया है, लाइक, और फिर जाके पार्टी कर रहा है नॉर्थ में. Bro, so that 1 week that I met Goendy, he was the only one person on the tables who used to show his hand after the hand to us. All the other guys used to treat us like shit. समझ गया. Okay. And bro, I hate that. Okay. I can't stand it when people don't talk to anyone on this planet with respect. It Sure. doesn't matter. Correct. Right? Like, unless and until, yeah, sure, he's an asshole and, you know, he's done Correct. something really, like, you know, not acceptable. फिर अलग बात है, bro. फिर तुम कैसे भी बात करो, मतलब वो हाँ. तुम पर्सनल ये है, right? बट समवन यू डोंट नो, तुम ऐसे मिले हो, कोई यार ऐसे ऐसे रिपोर्टर लोग होते हैं, तुम उनसे ऐसे अकड़ के बात करते हो, ब्रो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? लाइक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, आई एम अ वेरी जजमेंटल पर्सन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन नेचर, ब्रो. Like I don't know why, I don't know how, but that's just how I am. You observe, I think. You observe it. Yeah. So Goendy was someone who was always talking to us. He was like the best person on that floor, bro. He never made any of us feel like shit. In between hands, have fun with us. You know, तो वो तभी ब्रो गोइंडी और उसके और एक दो दोस्त थे तभी. आई रिमेम्बर वन गाइज नेम आई थिंक वाज लॉरेंस और समथिंग, और यू नो बेसिकली गोइंडी के एक दो बैंगलोर के दोस्त थे, उन्होंने आके पोकर. ब्रो देयर यूज्ड टू बी 15 प्लेयर्स, ब्रो. मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट से ही F2D चल रही है, इतना हेवी आई. समझ रहे हो? स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट से भाई लोग आईसीएम खेल रहे हैं, ब्रो. मतलब Oh yeah, actually, yeah. Oh ब्रो, yeah, नो wow. चिपीवी. Oh समझ रहे हो? wow. नो चिपीवी भाई, और ऐसे बड़े बड़े फोल्ड मेरे को गोइंडी वोइंडी ने दिखाया है ना, ब्रो. मतलब इट्स जस्ट क्रेजी मैन. लाइक दिस गाइस Understood. रियली, लाइक, ब्रो, आप समझ रहे हो? तुम समझो, हम तो भाई I 4 घंटे understood. Oh wow, I did गेम not खेलते think हैं, of this only. Yeah. Oh ब्रो. wow. फर्स्ट Yeah. हैंड से आईसीएम, क्योंकि है ही 15 लोग, Shit. 16 लोग, ब्रो. समझ रहे Crazy. हो? फर्स्ट हैंड से आईसीएम खेल रहे, ब्रो, लिटरली. राइट? सो ब्रो देन that's how I got to know Goendy. Then, bro, then I again continued playing cricket. Then all that downfall happened with poker and all. Then I stopped cricket, stopped poker, stopped everything. But I used to follow Goendy on Instagram. अच्छा. हाँ, ठीक है. फिर मैं गोइंडी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था. That's how फॉलो you करता saw था, PBCI. या Ah. देन आई सॉ, ब्रो. और फिर तभी मेरे को इंट्रोड्यूस ऑडी ऑडी से भी सब कुछ हो गया था, ब्रो. समझ रहे हो? तो मैंने, ब्रो, तब भी डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरे को जिंदगी में कभी भी कोई पोकर किसी से सीखना है ना, तो ये बंदे से सीखना है, क्योंकि मेरे को पता है पहली बात तो ये बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा है. राइट? लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पोकर स्किल्स क्या है, उसका माइंडसेट मेरे को पता है बहुत ही बढ़िया है, राइट? He might not be there skill wise, but his mindset, Goendy's mindset is just fucking too good. Like he knows how to tackle things so well. You know, there are some industries that Goendy has showed us of his hands that he's played. Bro, some folds that he's made, तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई. मैं तो उसको बोल रहा हूँ, ब्रो, तुम क्या फोल्ड कर रहे हो? मैं तो 2 सेकंड के अंदर कॉल दे रहा हूँ भाई.
तो हाँ मतलब नट स्ट्रेट ऐसे पैड बोर्ड पे तुम नट स्ट्रेट कैसे फोल्ड कर सकते हो? लाइक नहीं ब्रो, उसने हैंड कैसे खेला है तू वो दे। ठीक है, मतलब अगर उसने हैंड कोई अलग तरीके से खेला होता ना तो ब्रो मैं उसको कॉल देता, लेकिन उसने हैंड खेला ही ऐसे कि उसका फुल हाउस है ब्रो। या Right? So this whole mindset, this whole thought process of breaking down hands, and bro, I just like that, and I was like, okay, man, like this is what I want to start my poker journey with. And sure. that's when when I decided to take up poker professionally. I knew that I want to learn from day one. I don't want to do anything on my own. And you So said Tanay also kind of played an important role. He also kind of yeah, spoke to so you. then bro, I didn't get to talk to Goendy when I wanted to join PBCI. जो नंबर हाँ था वो तनय का नंबर था जो मेरे को मिला। हाँ हाँ राइट, हाँ तनय से बात कर रहा था तो मैंने तनय को पहला सवाल ये किया कि भाई मेरे पास 50,000 रुपए है। हाँ ठीक है, आपका कोर्स है 30 या 35 हजार रुपए का। हाँ मेरे पास अगर ये पैसे मैं आपको 30-35 हजार रुपए दे दूंगा, मेरे पास बचेंगे 15-20 हजार रुपए खेलने के लिए। हाँ तो लाइक आई आस्क्ड हिम, आपको क्या लगता है ये सही है कि मेरे को थोड़ा और टाइम रुक के शायद एक और टूर्नामेंट बिंक करके फिर आना चाहिए? लाइक भाई बिंक नहीं करेगा, सारे 50,000 हार गया तो। हाँ, उसने मेरे को हाँ सीधा ऐसा ही सवाल किया। उसने मेरे को बोला ब्रो ठीक है, तू बिंक करेगा, शायद तू आज ही खेलेगा और आज ही जीत जाएगा, लेकिन तू ये सोचना ब्रो, अगर तू नहीं जीता और सारे 50,000 चले गए तो। ही इज yeah. लाइक ब्रो, मैं तेरे को इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि तू अगर 30,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ना, वो जो तेरे पास बचे 20,000 है ना, उसमें तू Oh, 100% पैसे बनाएगा। wow. ही लिटरली टोल्ड मी दैट, ही इज लाइक ब्रो तेरे को बस एक दो चीजें करनी है जो मैं तेरे को बताऊंगा, जैसे कि बैंक फ्लोर मैनेजमेंट, ठीक है, डिसिप्लिन रखना है और रोज पढ़ाई करनी है। बस ये दो Yeah. चीजें करनी है। ठीक Nice. है, so I did that every fucking day of my life. Like every day of my life, you can ask anyone in the boot camp strat group. Like I used to 10:30, 11 in the morning में सबको जगाता था भाई। समझ रहे Yeah. हो? Yeah, bro, we used to have sessions like every day, man. Like for 2-3 months that I was at the course, I used to take up peer review sessions every morning, every But day yours with was like. offline, right? Yours was offline that time? No, no, it was online, bro. अच्छा आपका भी Online. ऑनलाइन ही था हाँ nice nice wow so that is how it happened and now what I want to discuss is the impact it's created in terms of also relationships right because what I've seen is I Yeah. remember जब आपने Endboss ship किया था and you spoke like everyone when you got those scores also and I remember Radhika putting up a story I remember a lot of people saying if someone had to get it had to be Pratik and this that and I didn't know Yeah. that but I could imagine I could see a lot of love so what is the reason Yeah. for so much love among the PBCI peers. Bro, I think all the love, all the connection happened because of these peer reviews, Hmm. right? Because I took the initiative of having peer reviews every morning. Hmm. These guys, because of how good a human they are, they decided to come and help me every morning, Sure. right? Uh, that's where the connection happened. We got to know each other. They saw improvement in my game. Bro, मैं एक टाइम पे pre-flop ace king suited fold कर रहा हूँ भाई। हाय अच्छा हाँ, अच्छा समझ रहे हो ओके ना ब्रो? मतलब बंदे मेरे को बोल रहे क्या कर रहा है भाई, पागल है क्या? 200 या बिग ब्लाइंड भी एग्जीक्यूटेड, देखो जाना है भाई, नहीं जाना है तो घर पे बैठ कर भाई भाजी काट, तू हाँ फार्मर बन। हाँ ना पोटो होकर मत खेल भाई, एस्किंग वेस्किंग तू फोल्ड करने वाला है ना चिपी हुई में प्री फ्लॉप, और 3 घंटे बचे लेट रख के लिए। तो भाई तू पोकर खेलना छोड़ दे, उन्होंने मेरे को बोला ब्रो। ब्रो तो समझो ऐसे ऐसे बातें हुई है, तो लिटरली लाइक इट्स बिन दैट स्टेज एंड फ्रॉम देयर they just kept on helping me every day, man. Like every single day, whenever I needed help, they like always helped me. फिर मेरे को core join करवा दिया तनय ने, right? Like तनय and Goendy offered me staking. Then when I sure took that up, then more connection happened with people. Because then like now I've gotten a little more closer to the boot camp, right? So sure now even like the core boys, that time Yash Chitre was in the core, so then more connection happened with him. So that's where, bro, all the connections started building with everyone, where like hand histories were happening, everything was happening. But when I joined core is when, the real like connection started to like actually happen, because now these guys also know that I'm playing this game professionally. I'm not here to correct fuck around, right? correct Like I'm not here to do any time pass. Like irrespective of whatever happens for the next 18 months, I am going to be with PBCI because that's my contract, sure right? So they knew that कुछ भी हो जाए भाई, ये अगले 18 महीने के इधर ही लिए है ये तो अपने साथ ही है हाँ अपने साथ ही है, तो चलो इसको पकड़ो हाथ और ले लो इसको, मतलब ना nice आड़े। who was this group राइट, what was this group what did this group comprise of who all were there so basically it was Anish Arora, it was Yash Chitre, it was हाँ Radhika, it was I don't know if you know this UD by basically, UD. So basically yeah UD by Karwa used to keep coming on and off for the hand histories. sure But Shardul used to be there, like, Shardul Parthasar used to always, like, he'll always come to, like, help me, like, he used to be there.
Udibai used to be there, Anish used to be there, Yash. So basically, these four, Radhika, all these 4, 5 guys are the main guys who helped me with my theories. Sure. Like they were the guys who were helping me in my hand history. Like Karwa was there on and off, because Karwa is a business, so he morning times and all he was busy with family and all. Sure. तो कभी कभी वो ड्रॉप इन करते थे 15-20 मिनट के लिए, थोड़ी गाली दे के ऐसा ऐसा खेलना है, ऐसा नहीं, और चले जाते थे, right? हाँ. So Karwa was like that, like part of it, but mainly it was like who helped me, like build, understand, like studying poker and really doing hand histories, the importance of doing hand histories mainly, or like Yash, Chitri, Anish, Udibai, Radhika, Got it. Shardul, like all these guys basically, like So mainly. all the top people who are really crushing it, मतलब people like that, if you're studying with, तो उसका impact दिखना ही था, and that's what's Yeah. happened. You've been playing now for 2 years at good stakes. Like I mean, आप mid stakes खेल रहे थे, I believe. Like you after like maybe since 18 months आप mid stakes खेल रहे होंगे, I believe. Yeah, low and mid stakes. Yeah, low and mid. Low come, but yeah, surely mid stakes. Yeah, I think buy-ins up to 3,000, 5,000 rupees now must be. Do you yet go out of bankroll now after that massive? No, bro. मैं 11,000 की टूर्नामेंट खेलता ही नहीं हूँ मैं अभी. Wow. I've staked up to 5,500 हाँ. and 11Ks I try to sati into it. So guys, just note this is a guy who's won 70 lakh rupees and he makes sure that वो 11,000 के टूर्नामेंट्स में रैग नहीं कर रहा है, and he's yet. Because bro फायदा है, मतलब क्या सेंस बनता है भाई, मतलब मैं सही है. स्किल वाइज वहां पे हुई नहीं ब्रो. Correct. स्किल वाइज छोड़ो, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं मेंटली भी वो स्टेट में नहीं हूँ Sure. 11 और स्विंग लेने के लिए. ब्रो Correct. इट इज पॉइंट आई हैव रियलाइज्ड कि जब आप खेल रहे हो ना, when you're in a session you can't be conservative. Correct. Right? When you're in a session. Yeah. Right? When you're outside a session, what your mindset is with your money, you handle it differently. Nice. Right? But when Nice. you're in a session, how you handle your money, okay, is completely. Yeah. You can't be conservative, bro. Because I like if you that. be conservative, you can't play poker. Right? बहुत सही मस्त बोला है. Yeah. Right? Now for me, how I do the math is, bro, if I am playing a 11K tournament, ठीक है, let's say it's a 11K 1 crore वाला ही ले लो, चलो 1 करोड़ 11,000 ठीक है, 11K once year, ठीक है, या 25 लाख वाला भी होता है 11K में, बट हाँ whatever. नहीं, लेकिन चलो 11K once year पकड़ लो, ठीक है ब्रो. हाँ. 11K once year टूर्नामेंट है अभी ब्रो. 11K once year अगर टूर्नामेंट है, अगर मैं ये टूर्नामेंट में एक बुलेट के साथ घुसूंगा ना, तो ब्रो मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद को चूतिया बोल रहा हूँ, बट ब्रो इट डजंट मेक सेंस. Correct. I have to be really lucky, right? Sure. To play any tournament, I think you need at least 3 bullets in each tournament. ठीक है? Sure. At least मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 3 के ऊपर जाता नहीं हूँ ब्रो. मैं कल संडे को गया 4, मेरी दिमाग का फुल Oh wow. I was like, this is not happening. You can't do this. 3 is your number. Stick to fucking 3. You can't slip to 4. Nice. Right? According to me, 3 buy-ins you have to have in any tournament you play. Right? Now for me, bro, since I've been capping myself to 5,500 buy-ins, आई थिंक कि अगर मैंने वो 11 की टूर्नामेंट छोड़ के वो संडे को, और समझो मैंने BSS सुपर स्टैक दैट्स 5,500, मैंने वो 11,000 के और 2 बुलेट 5,500 में मार के वो 5,500 के 3 के 5 बुलेट कर दिया. आई थिंक दैट इज मोर profitable for you. Yeah. rather than playing a 11K and investing only 1 bullet because I'm taking a shot. No, Sure. bro, it doesn't make sense. Like to me, I rather take that 11K and then invest 2 more bullets in super stack. Right? तो अभी मेरे सुपर स्टैक में मैं अपने चांसेस बढ़ा रहा हूँ वो 4 लाख जीतने के. जहाँ पे मैंने सुपर स्टैक के 3 बुलेट पे अपने आप को कैप किया, क्योंकि दैट्स माय हाईएस्ट बाय इन. मैं वहां पे वो संडे को वो 11,000 की टूर्नामेंट छोड़ के सुपर स्टैक में और 2 बुलेट ऐड कर दूंगा. करेक्ट. आप समझ रहे हो? लाइक जो जीतना है वो उसको ही बेटर जीतने का चांस करो, rather than doing short taking where you don't feel comfortable. Right. And now, bro, the other strategy I use is that let's say if in a 11K I win 1 ticket by playing a sati, then I'll use 1 more bullet. Okay. Because then you again want to make sure that अभी मैं I'm committing to it properly and then I'll go for it. हाँ, तो अभी कमिट कर दिया ना, अभी एक टिकट तो फ्री में आ गई है. समझो मेरे को 2,000 रुपए, समझो 1,100 की मैंने सैटी खेली, समझो मैंने 3 बुलेट मार दिए वहां पे, ठीक है, तो मेरे को 3,300 में मेरे को 11,000 की एक टिकट मिल गई. ठीक है, अभी ब्रो एक बुलेट के साथ तो मेरे को कोई टूर्नामेंट खेलना नहीं है. ठीक है ब्रो, अभी शॉर्ट ले लेते, क्योंकि अभी तेरे पास एक बुलेट 3,300 में आ गई, तो तेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 14,000 में. तेरे को 2 टूर्नामेंट, तेरे को ये 2 बुलेट का सुविधा हो गया. करेक्ट. वहां पे तू 22,000 से तू सीधा मतलब तू 8,000 बचा रहा है. करेक्ट. तो ब्रो वो 8,000 फिर आप वापस कैलकुलेट करोगे तो सोचो ब्रो, वो 8,000 आप 4400 टूर्नामेंट में और 2 बुलेट यूज कर सकते हो.
राइट, right? ये अब Like कब प्लान करते हो, job, ये कब प्लान yeah. करते हो, व्हेन डू यू प्लान Bro, ऑल ये दिस? सब I do all this before the grind, man. Before I sit for my एवरी डे, grind. एवरी डे ये होता है, Yeah, एवरी bro. डे? I sit, I make my schedule. So when I make my schedule before I start my grind, I do my math. I see, I choose my games. And अक्रॉस then मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पूरा डिसाइड yeah, yeah, करके, yeah, yeah, yeah. एंड देन फिर कुछ ऐसे भावनाओं में बहने का काम नहीं होता ना कि अरे यार अभी चल एक और कर लेता हूँ, वो हार्डली, मतलब इट, आई एम श्योर इट कल हैपेंस। हुआ, कल हुआ, कल हुआ, कल हुआ, ब्रो, कल हुआ एंड अभी से नहीं होगा। गॉट इट, सो यू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट, गॉट इट। 100% ब्रो, कल हुआ और अभी से नहीं हुआ ये ब्रो। मेरे को ये गेम जिंदगी भर खेलना है ब्रो। श्योर। मेरे को ये गेम एक साल खेल के एक और स्कोर लाके छोड़ना नहीं है ब्रो। मेरे या को बहुत बड़े स्कोर लाने हैं, मेरे बहुत बड़े सपने हैं ब्रो ये गेम को लेके। अगर मेरे को नाइस। वो सपने पूरे करने हैं तो मेरे को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ब्रो। क्या है नहीं होगा सपने, क्या है सपने? ब्रो। सपने तो होते हैं वही जो सबको होता है ना ब्रो, हर पोकर प्लेयर का कि ब्रेसलेट जीतना है, राइट? बट या that is something I'm not, bro. I want to स्ट्रेसिंग play ओवर। like the best players in the world, bro. That's my goal. Like that's my goal. Like I don't care if I ever win a WSOP bracelet or if I श्योर। ever win a Triton event or something. That's not my goal. My end goal is to play with the like poker career wise, right? Like the game. I'm only talking game specific. Like my end goal is to like play with like the best in the world and study with the best in the world. Like that's my end goal. Like for me, yeah, sure, bro. WSOP bracelet जीतूंगा तो I'll be very grateful. But like I think what is in my hands is this. This is something I can achieve, which is in full in my control, right? Like winning a WSOP bracelet is not in my control because there's गॉट इट, variance. बट यू Yeah, कैन so I रीच might. एंड रीच द टॉप Yeah. लेवल, स्टडी विद द राइट Yeah, पीपल। yeah, absolutely, bro. Like and how do I do that? By, having massive discipline, like, sticking to my routine, doing my shit every day, श्योर। showing up every day, no matter how bad a Sunday you had, you have to grind on a Monday because Monday all the regs chill. या या So या doesn't care. You've bricked yesterday, you've not even cashed one tournament yesterday, and you've been out of discipline yesterday. But hey, get your shit back together and grind today. You know what करेक्ट। I mean? Because you're a professional. You're a professional poker player. You go around talking to the world that you're a professional poker player. So be professional. This is your या job. You're going to get hit every day in your face. You can't help it. You just have to come back with a swollen face the next day and try to, smile and be happy, and be grateful. And that's the whole plan, bro. Like every day, like no matter. And this has been something I've been like religiously following now for the past like 8, 9 months. Bro, in the last like 8, 9 months of my life before Endboss happened, I had not taken a break. I had not taken a break. I was grinding and studying every day, and workout happened like in the last 3, 4 months. श्योर। वाओ। But for the past like before Endboss, like 8 months, 9 months straight, I've not taken a day break. Like I must have taken a day break, maybe हाँ one समझ गया, day. बट यू वर ऑन, बट यू वर वेरी मच Yeah, ऑन bro. ओनली, I हाँ। was I was I was working like 16 hours a day, man, like every day, and thankfully, like very thankfully, like burnout didn't happen. I was just या enjoying the process. ब्रो एक टाइम पे तो मेरे पास रेंट भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे को उस टेंशन ही नहीं था ब्रो। समझ रहे हैं? मतलब 30 तारीख को मेरा रूममेट आके मेरे को बोल रहा है, भाई आज 30 तारीख है, कल रेंट भरना है। अरे हाँ क्या, आज 30 तारीख है? मेरे को तो पता ही नहीं है। या So I completely forgot about money. Like I was just नाइस। enjoying my work so much because I just realized, bro, अगर मैं enjoy नहीं करूंगा ना ये गेम तो यू विल कुछ नॉट नहीं बी होगा सस्टेन, तो। हाँ सस्टेन नहीं कर हाँ, पाओगे। मतलब ब्रो फिर तू बैग पैक करके बॉम्बे चले जा और मम्मी के गोद में बैठ, like it's like that. Like so you have to learn to be mentally strong, smile, be happy, and genuinely be happy. It's a very या difficult thing to be happy. It's not easy to be happy, but you have to find things in your day-to-day life every day to do for yourself that are going to make you happy. And if you don't do that, it's very hard to be successful in your life, नाइस। bro. Like honestly speaking, it's very hard to be successful because I've tried very hard to be successful in my cricketing career. And when I या look back at it today, I think I massively failed because I tried very hard, but I wasn't happy. I was always complaining. I was always complaining that, oh, this guy he got into the team, but he's a fucking choot. Like that's गॉट not इट। how it is. Like नो today, bro, I'm seeing in the last 2 years, in the last 1 year that I've been playing poker, I am personally very happy every time my peers get a score. I have no jealousy. I have like, या nothing like against them. Like, हाँ ठीक है, अभी like someone like Aryan Gurbaksani, या because of his game style, bro, हम लोग सब लोग उसको मुंह पे गाली देते हैं। हम लोग अच्छा सब लोग उसको मुंह पे लग बॉक्स बोलते हैं,
right? But he takes it very sportingly because he knows that, bro, हम लोग उसको सिर्फ मजाक में बोल रहे हैं, but Sure. also, bro, we get harsh also with him, right? We Yeah. tell him there are some things that he does are very unorthodox, bro. You're never supposed to do it in the game, and he does it. But bro, he is someone who will always listen to us. वो हाँ. कभी भी पलटा उठ के हम लोग को ये नहीं बोलेगा, नहीं भाई तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मेरा तो Yeah. चल रहा है. वो कभी भी ऐसा नहीं बोला उसने हम लोग को, bro. Sure. So it's just been like, like this game has just been like fucking amazing. I think one more learning about poker is like what you just said. काफी सही है. Want to talk about what does an end boss? What did that end boss mean to you, man? Like कैसे हुआ? I mean, where did it like catapult your career? And क्या हो गया? End boss का एक स्कोर से क्या हुआ? ब्रो, एंडबॉस के एक स्कोर से बस ये ही हुआ है मेरे लाइफ में कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है. Sure. ठीक है, और कुछ चेंज नहीं हुआ मेरी लाइफ में. Okay. Okay. But that's a crucial thing now because security again for a poker Exactly. player is also Yeah, very mental को mindset का बहुत important part है. Yeah, but bro, also understand there is a trick to this. हाँ. Okay, what is the trick? The trick is that right, there is losing tilt and there is winning tilt. Correct. Right? So Yeah, the trick is yeah. winning tilt. Okay. हाँ. Bro, वो complacency आ जाती है ना. Sure. खत्म हो Which was जाएगा. my follow-up question. कि अब Yeah. up top 1.5 लाख रुपया हो तो मजा आता है खेलने का for a 1,20,000 rupee up top tournament? Is it the same or is it different now? No, bro. It is very much the same, man. It is अच्छा. very much the same, bro. Okay. I am still playing 550,000x वाला जो 9 बजे होता है on बाजी. I'm still playing. If I get to reg 880 sprint, I play that. I play 1100 tournaments, bro. For me, like I said, bro, nothing. Value is value. हाँ. वो professional. Okay. Yeah, bro. For me, nothing has changed. The only thing that has changed is, bro, that now I don't need to think about paying rent every month. I don't need to think about paying a salary that I don't have because now I have that money. तो वो stability है. Bro, मेरे पास जो भी पैसे आ गए मैंने सीधा आधे तो FD में डाल दिए, bro. अंदर. I was just going to ask you that. क्या how did the money get balanced? हाँ. Bro, आधे लॉक कर दिए. आधे मैंने अभी के लिए लॉक कर दिए ना, simple investment of an FD because I didn't want to think about my money right now. I just wanted to be safe for some time. I want to focus on poker. So I was just like अभी के लिए मैंने 3 साल के FD में सब कुछ बंद करके रख दिया है, bro. 3 साल के बाद. You can't even touch it now. Yeah, I can't touch it. I mean, I can touch it, but I have to pay a fee to take my FD, right? Like, Yeah. But yeah, bro, for 3 years I don't want to think of the saved money. That's going to be my 3 साल के बाद देखेंगे वो पैसे का क्या करना. अभी 3 साल के लिए तो full focus only on poker, bro. Like there is. And remaining other half का क्या किया? Other half के bro account में पड़े मतलब रखे. Basically I have 3 accounts, so I've divided the money into 3 parts. Sure. One part is where that is my account for my monthly kharcha. One account is where I have kept money to play like some poker games when I go. Like let's say I fucking go for a home game. I want to let's say casino जाने का मन हो गया कैश खेलने के लिए. तो मैंने अकाउंट वैसे बना के पैसे उसमें रखे. अच्छा, interesting. Right? और एक मैंने पैसे अकाउंट में बल्क रखे हुए. All these accounts are basically bulk only. Like even the poker money that I've kept aside to play, and let's say अभी live tournament DPT आ रहा है. Right? So now basically when I play live tournaments, like Goendy doesn't stake us. He asks us to play on our own. Right? So वहाँ पे फिर वो तो मैंने एक वहाँ पे रखे हुए 4 लाख. Right? एक मैंने यहाँ पे रखे हुए कि मेरे को अभी I'm not gonna holiday on a really long time, bro. So I'm like ये सब गोट वोट खत्म होएगा, मैं सोच रहा हूँ उसके बाद एक छुट्टी पे चले जाओ. तो वो मैंने एक अकाउंट में छुट्टी के लिए पैसे साइड में रखे हुए हैं. और वो थोड़ा छुट्टी लेजर एंड एक्टिविटीज वाले थोड़े चिल के. तो वो पैसे मैंने बेसिकली मेरे सब अय्याशियों के लिए एक अकाउंट में साइड में रखे. Right? So that's how I've divided my money, bro. And like basically if my monthly account money gets over, I'm broke for the month. As simple as that. So you won't transfer from the other account to this account, which is nice. No. Perfect. I'm broke for the month, bro. Then play poker, fucking win a bloody 880 tournament and make 1 lakh. And bro, that's why 1 lakh is very important, bro. I understand. Nice. Bro, पैसे खत्म तो होंगे ना, bro. मतलब सही है. करने के लिए मेरे को भी अच्छे लगते हैं, तो पैसे तो खत्म होंगे. Nice. Because आपने ये भी बोला, right, कि आप you're ready to give it to friends, loan it out to friends, or give it out to friends. तो वो सब करते हो तो then you have to keep a हिसाब, right? Or else it's also that you'll land up again back to this thing, which you don't want to. So yeah, exactly. Because the game also involves a lot of financial management. Like I think that is a key part of our game. Absolutely, bro. If you're, and I'm someone who's not good with my finance, bro. I'm saying this like very like I've done a lot of fuck ups because I think the
fallback and the drawback for that whole thing is because I had earning money from the age of like 13, 14, right? तो मतलब मेरे को Yeah. कभी घर वालों ने कभी कुछ बोला ही नहीं bro, और बोला तो मैं उन लोगों को बोला, "भाई चुप करो भाई, मेरे पैसे है।" पैसा है हाँ. हाँ, Yeah, yeah. तो ब्रो दैट्स हाउ आई ऑलवेज बीन। मैं मतलब 13 साल की उम्र से ही अय्याश, मतलब 15 साल की उम्र में दारू पीता था ब्रो, समझ रहे हो आप? Sure, मतलब ना sure. तो ब्रो वहां से मतलब समझ रहे हो, अभी पोकर खेलता है भाई। अगर पोकर में मेरा अभी भी जैसे डिसिप्लिन तब था, अगर अभी भी पैसे के मामले में डिसिप्लिन वैसा होता ना तो ब्रो, तो अब तक मैं वापस मेरे 60 लाख खत्म हो जाते ब्रो, समझ रहे हो? ये जो मैंने आधे सेविंग में डाले ना, वैसा कुछ नहीं करता ब्रो मैं। लाइक आई Sure. वुड हैव Nice. gone and just probably gone on a holiday to Europe and blown all the money off and like smoked weed and enjoyed myself and Yeah, yeah, yeah. yeah, but this time bro I was very clear. As soon as the score came I was like come on, get back to it. ठीक है ब्रो, एक दो दिन शांति कर ले, आराम कर ले, Nice. बट काम पे लग भाई। काम पे Nice, लग। nice, nice, nice. Yeah, I see that. Like you got a very different perspective, and वो चीज हुआ है. And I've also seen ये reasons का your fitness has been a core part of this entire journey in the last 3-4 months, and Yeah, you had also attributed कि यार वो results भी मेरे काफी उसके कारण हो रहे हैं. Like yeah. that thing has impacted my results. क्या है? What is the? It's called Mathai Tharan. I don't know what is it called. Yeah, so Mata is his name. So Mata is my trainer. Oh, okay, He's yeah. So he's Goendi's childhood friend. Like he and okay, Goendi best of friends. And so I have a back problem. Okay, I have a lower back problem, which is sure. quite bad, bro. Like when it's quite bad, now what happens is, bro, when I start putting on weight on my stomach, I get these episodes where my back just spazzes हाँ. and I can't move, bro. For like 1 month, I'm completely bed rest. Oh. And I'm in severe pain for like at least 2 weeks. Okay, Hmm. for like 2 weeks, I'm just popping Combiflams, like 2 to 3 Combiflams every day and just sleeping. Got it. Okay. Now, bro, Mata is someone who's gone through a similar back injury. Sure. Okay. And he is now a fitness trainer. Okay. So I started off around, I think I started going to the gym in Feb. I think Feb or something like that. Feb, March, I started going to the gym. And after a month, 2 months of going to the gym, I just realized, bro, I'm not enjoying this because now Sure. the trainers have started to know me in the gym. Okay. And they had started to try to push me, bro. Push me मतलब heavy weights उठाओ. हाँ. राइट लाइक मैं ब्रो अगर बेंच प्रेस कर रहा हूँ मतलब 10 किलो का, तो उन लोग मेरे को अभी 15-15 किलो वो करवा रहे हैं। वही है ना, जिम में वही है, वेट्स हाँ इंक्रीज करते जाओ. हाँ, हाँ. ठीक है, तो ब्रो मैं वो कर नहीं सकता हूँ, मेरे को मेरे बॉडी की लिमिटेशन बहुत। तो ब्रो उस करेक्ट. दिन ना जब मेरा एक ट्रेनर क्या थोड़ा एक ये हो गया, मैं उसको बोला भाई तू हाँ. चुप कर भाई, मेरे को मत बता क्या करना है, ठीक हाँ, है? रिलैक्स कर. हाँ. पीठ, हाँ मेरी अगर पीठ यहाँ पे अकड़ेगी ना भाई, एक में ना मेरे को दर्द में ना मेरी फट जाएगी। तू यहाँ पे साले रोज आके लोगों को ये बोलेगा 15-15 कर। लाइक ब्रो चिल कर ना। आई वाज लाइक ब्रो तू मेरे को बता मेरा फॉर्म सही है कि नहीं, तू मेरे को वो हाँ. बता, ठीक है? करेक्ट. बाकी तो मेरे वेट वेट का तू वो सब मेरे को बता मत। तो ब्रो ये सब जब चालू हुआ ना, फिर मेरे को मेरा जिम से मन उड़ गया ब्रो। मैंने बोला ब्रो खत्म हो गया ब्रो, नहीं जाना है जिम, मेरे को मत है क्या ट्रेन करना है, ठीक है? अब मेरे को मत है क्या ट्रेन करना है, तो मेरे पास लेकिन पैसे ही नहीं है भाई, क्या करेगा तू हाँ. मत है क्या ट्रेन भाई? हाँ. कैसे करेगा अच्छा, मत है दैट्स क्या? एक्सपेंसिव कोचिंग. अच्छा. Bro, I mean, I'll tell you the numbers off, but like I'm paying, a A good nice amount of fucking money. amount for a session, bro. Like, and I'm doing like 20 sessions, like 16, 15 sessions a month, Wow. so that's like on my fitness, I'm spending like almost like 15 to somewhere between 15 to 25 grand for the whole month just on my training, Wow. right? So I didn't have any of that money, right? Sure. Now, hello, go Andy. हाँ. What's up, brother? Brother, I want to train with your best friend, brother. हाँ. कुछ तो करो. हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, ठीक है? मैं मताई को मैसेज कर रहा हूँ, अगर मेरे ये मंथ के एंड तक मेरे पैसे नहीं बने हाँ. तो मैं फ्लोट से निकाल के उनको दे दूंगा और मैं फ्लोट में एडजस्ट कर लूंगा। तो इज लाइक ब्रो ये सब मामले में तू बिंदास देखो जो करना है कर, हाँ. राइट? Grateful, you know what I mean, bro? These are things that I'm grateful for. Like I had to never stress about any of this, bro. When I didn't have money to pay for rent, 4, 5, 6 months back, Tanay helped me that time a lot. Sure. Tanay was still with boot camp that time. Now he's like not with boot camp. So, like things basically that time when he was there, bro, he was one of our backers. He and Goendy was backing us together. So, bro, that time Tanay helped me a lot. So Got it. Goendy is like, bro, don't worry, you just go ahead. So I started talking to Matai, we started training. Yeah. Bro, only and only the first month I had to pay 8,000 rupees for my float for Matthias हाँ. fee. हाँ. After that, things just changed for me. Like every week, I was like shipping a tournament.
यू नो मेरा मंथली प्रॉफिट हो गया था, मैं मंथ के एंड पे 2 लाख चॉप कर रहा हूँ, 2 लाख Sure. चॉप किया, 1 लाख मिल गया, पोस्ट टैक्स 70,000 मिल गया। 70,000 में से मताई की फीस है ब्रो 15-20 हजार, मताई को दे दो 15-20 हजार 25 हजार जो भी है, बचे 50,000। 18,000 तेरे रेंट के, बाकी के बचे 7,000 तेरे, 25,000 बेसिकली तेरे रेंट के, और उसमें बचे तेरे पास भाई 25,000 खर्चे के लिए महीने के लिए। Correct. ठीक है, वो 25,000 के खर्चे जो बचे वो उसमें मेरे घर के बिल्लियों का खाना, Everything. Yeah. वेजिटेबल्स, मेरी अय्याशिया, ये वो सब कुछ जो 25,000 में करना है मेरे को। ठीक है, तो ब्रो ऐसा ये हो गया, चॉप होना चालू हो गया जैसे। फिर ब्रो उसके बाद तो ब्रो नसीब से आई डिडंट हैव टू लाइक टेक फ्रॉम फ्लोर, बिकॉज आई हैव जस्ट बीन लाइक ट्रेनिंग विद हिम, एंड ही हैज जस्ट ब्रो, ही हैज बीन such a big support system, you have no idea man, I like see it in your stories the and I see this thing, so I kind of understand कि मतलब it has created a huge impact. bro, the way he pushes me every day, the things that we do when we work out, for me, it is extremely challenging. Yeah. Right? Now, bro, think about it, when I'm going through such extreme challenges in one activity of the day, this activity of playing poker and these extreme challenges that I It's go through. not that extreme anymore. Acha. Yeah, because now it's all becoming muscle memory for me, bro. My mind is starting Yeah. to observe these tough situations so well. Bro, when I was playing Endboss, I didn't care. I honestly didn't care. Like, I Yeah. have never been like that, bro. I just didn't care. My mind was just like, bro, hand आया, hand kill. बस उसके बाद बैठ जा, chill कर, bro. Hand table पे देख क्या चल रहा है. Got it. Literally, bro. And I think all of this mindset had it just happened because uh the things that I go through in my workout sessions are like extremely, extremely challenging. So now in this situation, I think just becomes so fluid. It just becomes like fluid, like I'm just flowing in the Sure. moment. Like there is no distraction, because I know during my workouts also I have to be so focused, because if I do one thing wrong, bro, my back will get screwed. Yeah. You know what I mean? If I lift the weight like wrong, I am so like weak that my back will just click and I'll have to just fall. So I have to do everything with focus. Yeah. Right. So all that focus is added up in my grind, bro. And Nice. then like while I was doing everything in my day, I was just focused. मतलब मैं प्रोटीन शेक भी बना रहा हूँ ना, मैं फोकस से बना रहा हूँ ब्रो। like there was so much focus. Like मैं बिल्ली को खाना भी दे रहा हूँ ना, उन लोगों को फोकस से खाना दे रहा हूँ कि हाँ भाई बराबर खाना मिल रहा है ना, दोनों को बराबर खा रहे हैं ना। Like bro, everything has just become like focus, like, and Nice. it changed my life, bro. Like it just completely. So I'll tell you a very interesting incident. Okay, on the end was Sunday, bro. Huh. Okay. On the end was Sunday. Day two. I trained with Mata in the day, okay? Huh. Yeah, I trained with Mata at like 11, 10 in the morning, 12 in the morning. And bro, मेरे पास उसको फीस के देने के पैसे नहीं थे वो Huh. महीने के लिए, ठीक है? मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे को Huh. वो महीने का हम लोग का हिसाब कुछ तो 16-17 हजार का था मेरे पास। हाँ, 16-17 हजार का था, मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक Huh. है, मेरे पास सिर्फ क्या था पता है ब्रो? मेरे पास कुछ फूकने के लिए था। Huh. ठीक है, Huh. मैंने उसको बोला ब्रो, देयर इज समथिंग दैट आई हैव, एंड लाइक इफ यू व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला। सो ही लाइक या श्योर ब्रो। सो मैंने उसको दिया एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाटएवर इट इज, यू जस्ट कीप दैट मनी। तुम मैंने लिटरली वो देके ब्रो सैक्रिफाइस Barter करके ना। trade. You हाँ, traded like that. I paid for my training bro, because I was like Yeah. yo क्या पे हो गया भाई, ओसीडी के पोकर खेलना है कि फूकना है, देखो बहन चोद। Yeah. तो चल निकाल ये सब भाई, ये घर से निकाल ब्रो। Like you have a big night coming up, you don't want all this shit around you, like just give this away, pay your dues. And I told him bro, this is what it is, ऊपर का पैसा मैं आपको दे दूंगा, मतलब अगले 1-2 हफ्ते में। अगले 1-2 हफ्ते में क्या ब्रो, रात को एंडबॉस में सेकंड आ गया। Yeah. Like you understand bro, like I like all these things happen, and I was like, he was also like bro, you understand right, like when your mind, when you happily know na, when you let go of these obsessions that we have, when we happily let go of it now bro, the universe will just work things out for you. Sure. That's just how it is bro, because the universe starts to see how serious you are about your own life, how serious you are about making a change in your own life. And if you yourself can't be serious about making a change in your own life, there is no one who can do that for you, right? No mentor, no coach, like no one. Yeah. Right? Yeah. Effort has to come from you. Yeah, absolutely, bro. And for me, these were small clicks in my head that happened, because I was like, bro, I don't have money, I have to pay people, bro. मैं यहाँ पे ये खरीद रहा हूँ, bro, ये खरीद रहा हूँ, मैंने खुद के पैसे से खरीदे ना भाई, तो अभी Yeah. निकालो, पे कर अपने ड्यूज भाई। नहीं Yes. बनाए पैसे मैंने, भरने भाई पैसे, फीस भरने, क्या करेगा अभी आदमी के थोड़ी पैसे खाऊंगा मैं ब्रो, मैं ऐसा थोड़ी हूँ। वो सब किया मैंने 20-21 साल में ब्रो, अब नहीं कर सकता हूँ मैं। आई एम वेरी Correct. वेरी विथ मनी ब्रो, आई डोंट लाइक इट।
मेरे को नींद नहीं आती है ब्रो, अगर मैं किसी को 500,000 रुपए भी देने मैंने दिए नहीं ना, मेरे को नींद नहीं आती है रात को ब्रो। लाइक नाइस। दैट्स फॉर मी। बिकॉज ब्रो लोगों का मेहनत का पैसा है भाई, लोग थोड़ी यहाँ पे मतलब ना डॉन है सब लोग और सबके पास काला पैसा, सब अपना मेहनत कर रहे हैं ब्रो, सब सुबह से नहीं शाम था। घिस रहे हैं राइट। उन लोग देखो पैसा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो भी है ब्रो, रिस्पेक्ट दैट राइट। लाइक एंड फॉर मी दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट दैट डे। आई वाज लाइक ब्रो, इट्स द लास्ट डे ऑफ द मंथ, आई डोंट हैव फीस मनी टू पे यू, कैन यू प्लीज लाइक टेक दिस and whatever we'll do the adjustment. He's like, yeah, sure bro, no problem. Like and that's how it worked out bro. And then I was like, bro, I want to book bro। अगले दिन मैं उससे बात किया, मैं उसको बोला ब्रो मेरे को पूरे साल के लिए सेशन बुक करने तेरे Yeah. You साथ। entered day two with how many bigs? You entered day two with how many 100 bigs? bigs bro, 100 You entered with bigs। 100 bigs. So you had a stack. You entered with a stack. Wow. So yeah, you must kind of, you were positive कि tonight's going to be something good. I'm entering with 100 bigs. Bro, you will not believe this also right now, I backed a stack, मेरा grind खत्म हो Yeah, गया। it's the Endboss story, huh? ठीक है, आई बैक डे वन एंड मेरा ग्राइंड खत्म हो गया, एक ही टेबल चल रही थी डे वन तब तक। साला मैं 7 बजे ग्राइंड, मैंने तभी 10 बजे ग्राइंड चालू की थी ब्रो, और बेसिकली मैंने टेबल्स लोड अप कर दिए थे धप धप धप। मैंने बोला कि हाँ आज सब जगह पे ना मतलब एक एक दो दो बुलेट स्पिन अप करने की कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, 2-3 जगह पे स्पिन अप हो गए, 4 टेबलें चल रही थी ब्रो। एंड ऑफ द टाइम बाय 1 o'clock आई हैड 1 टेबल लेफ्ट ब्रो, ये एंड बॉस की। हाँ बॉस का डे वन खेला खेला ब्रो, 100 बिग ब्लाइंड हो गए। अभी हाँ 100 बिग ब्लाइंड ब्रो, डे वन खत्म हो गया, मैं बाहर गया हूँ अनीश से मिलने। ठीक है, मैंने अनीश को बोला ब्रो अच्छा स्टैक बैग हो गया यार एंड बॉस में 100 हाँ। बिग ब्लाइंड का। तो अनीश बोलता अरे वाह यार ब्रो 100 बिग ब्लाइंड का। मैं बोला हाँ ठीक है। ब्रो 5 मिनट के अंदर मेरे को हिट हुआ है कि आई बैग द 100 बिग ब्लाइंड स्टैक। Crazy. Yeah, yeah, yeah. एंड आई टोल्ड हिम ब्रो, he's like yeah, I told him bro I have a legit shot at this man, like this is Ah, fucking bro, because I went and I looked at the day two ka stacks bro, the structure is so shallow, and in yeah. such a shallow structure I have 100 bigs। Correct, correct, correct. Yo, It's like huge, there huh? are, bro, there are 860 people. Out of the 860 people, there are 490 people who have like 12 bigs, bro। Correct, correct, correct. It's always आप like that. समझ रहे Yeah, हो, yeah, आप yeah, समझ yeah. रहे हो मतलब ब्रो आई हैव अ legit shot bro, and that's when it hit me like, and I was like bro this is like I have to stay focused this week man, I have to not think about it, I have to just go about my routine as I am every day, but I have to keep this in the back of my head, and Yeah, bro from that night, like the next day when I was working out every day in front of my eyes, I was just focused man, like yeah. every set that I did, every like muscle that I was working on, everything that I did was just focus after that, and bro that just like the Sunday grind, I started my grind also Sunday को 8 बजे ब्रो। मैंने बोला एंडबॉस का डे टू 8:30 बजे चालू हो रहा है, 8 बजे ग्राइंड चालू करूंगा, 4-5 टेबल खेलूंगा आज, बस और कुछ नहीं, But 4-5 टेबल let's, खेलूंगा। wow. हाँ बहुत अच्छे से खेलूंगा ये 4-5 टेबल, बहुत बहुत अच्छे से खेलूंगा फुल फोकस के साथ, और 8 बजे ग्राइंड चालूंगा ताकि 8:30 बजे तक थोड़ा वार्म अप हो जाए। Sure. राइट, आई डोंट डायरेक्टली स्टार्ट एट 8:30 एंड जंप इनटू एंड बॉस राइट, आई लाइक थोड़ा वार्म अप हो जाएगा तो आधे घंटे पहले चालू करूंगा। तो 8 बजे मैंने ग्राइंड चालू की ब्रो। व्हेन एंड बॉस स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट 3 hours आई डिडंट प्ले, आई प्लेड वन हैंड। Hi, hi, hi. I Acha. played one hand. I was just bleeding out, bro. I was just bleeding out. Like I wasn't picking up spots. I just बहुत कुछ हो ही नहीं रहा था, bro। और मैंने बोला तू सिर्फ ऊपर के नंबर देख, लोग कम होए जा रहे, ब्रो, कम होए जा रहे। बहुत मैं देख फास्ट, बहुत जल्दी, 1 घंटे में तो ब्रो, मैं हाफ की देख रहा लोग। हूँ हाँ ब्रो, मैं देख रहा हूँ 700, अगले 10 मिनट में देख रहा हूँ साला 550। हाँ मैं बोला हाँ। ये क्या सीन है। मैं बोला भाई तू हैंड खेल ही मत, तू बैठ शांति से, तेरे को जरूरत ही नहीं है, तेरे को यहाँ ब्रो। आई लिटरली टोल्ड माय सेल्फ कि ब्रो तेरे को यहाँ पे बकचोदी करने की जरूरत ही नहीं है। Yeah, स्टैक yeah. तो है सब ठीक है, लेकिन तू ये समझ कि अगर तूने यहाँ पे स्टैक को मेंटेन करके रखा तो जब You'll run 50 deep. लोग बचे ना, जब 50 लोग बचे ना, फिर किसी को आईसीएम समझ में नहीं आता ना, सबके ऊपर प्रेशर डाल। Yeah, yeah, yeah. राइट, बिकॉज आई वाज लाइक ब्रो तू लास्ट 3-4 महीने से क्या पढ़ रहा है, आईसीएम पढ़ रहा है ना, तो तेरे को आईसीएम खेलना है ब्रो। ये आईसीएम है हाँ ठीक है, लेकिन ब्रो ये अभी भी मतलब बहुत 50। सिंपल है, हाँ मतलब या। हाँ 50% फील्ड बची है ब्रो, तो 50% फील्ड बची है। मैं लोग को समझता नहीं है 50% फील्ड कैसे रेंजेस के लिए ब्रो। 50% फील्ड के रेंजेस भी बहुत टाइट होते हैं आईसीएम में, राइट, बट लोगों को पता नहीं है। तो लोग जब 400 लोग देखते हैं बचे 800 में से, लोगों को पता नहीं कि अब तुमको कितना टाइट होना है, श्योर। राइट। तो लोग पीपल आर स्टिल प्लेइंग लूज ओनली। तो ब्रो या आई वाज लाइक नो नो दिस इज नॉट द टाइम। जब 10% फील्ड बचेगी ना, 80 लोग 70 लोग ब्रो, फिर यू देखना विल मतलब, स्टार्ट। हाँ फिर देखना ना सब कैसा जब रेस करेंगे, और जब तू 15 बिग ब्लाइंड के स्टैक के साथ 4 बिग ब्लाइंड का 3 बेट करेगा तो कैसा हिलेगा, राइट। उसको समझ नहीं आएगा एट स्पिन के साथ क्या करना है ब्रो, उसको समझ में नहीं श्योर। आएगा 10 क्या करना है, उसको समझ में नहीं आएगा जैक्स के साथ क्या करना है। वाओ। मेरे या पे एस 10 है ब्रो, मैं तो 15 बिग ब्लाइंड के स्टैक के साथ 3 बेट कर रहा हूँ तेरे को एस 10 ऑफ के साथ।
Bro, so basically, man, like these are things that I understood in my grind, and I was like, bro, you just hang in there, man. Like you can just like take these people later. ICM is where you have Yeah, to, but I you had the know, same experience. 75 BB is what I carried forward when I yeah, played Endboss, and yeah, I finished yeah. 22nd. I wish I Oh was also. yeah, Yeah, man, not that game, but in the prior one. other one, Yeah, last May. But yeah, if you Hmm. carry a stack, you are lethal. हाँ मतलब आप बहुत ज़्यादा Yeah, advantage ले yeah, bro. सकते हो. Yeah. Yeah, bro, absolutely. Like the thing is that in these day twos which are so shallow ना, अगर समझो आप डे टू 30 बिग ब्लाइंड के साथ भी करोगे ना एंटर तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो 30 बिग ब्लाइंड को ना आपको पहले 2 लेवल में स्पिन अप करना पड़ेगा Correct, ब्रो. correct, correct, अगर correct. स्पिन अप नहीं करोगे तो मतलब फिर फायदा नहीं है ब्रो. फिर मतलब वो 30 के हो जाएंगे 5 अगले 3-4 लेवल में और खत्म हो जाएगा. Yes, yes, yes. समझ लो फिर तुमको ड्यूटी से पॉकेट दूसरे जैम करने पड़ेंगे 6 बिग ब्लाइंड के लिए. मतलब तुम क्या ही मतलब समझ लो. मतलब Correct. वहां पे बिग ब्लाइंड के पास पड़े 70 बिग ब्लाइंड, वो कॉल करेगा 5-6 सूटेड के साथ. समझ लो हाँ, और लगा सिक्स वो देगा. भी रिवर पे. समझ लो. तो मतलब मैं बोला भाई ये सब मतलब ना तू बाद में कर दे. जो भी मस्ती करनी है ना लोगों के साथ तू बाद में Yeah. कर Nice, लो huh? Good one, काट good लो one. मुझे. या Crazy, crazy. Wishing you luck because right now also it's on. And I want to last discuss is a new variance has hit poker, the या GST. या Probably we are last month of before the GST hits us. या क्या या लग रहा है? What's your take on it, man? क्या लग रहा है? How are you seeing it? ब्रो I am just hopeful. Okay, I'm not saying that things are going to be amazing or things are going to be really bad, but of course, I'm hoping for the best. Yeah, But if sites are on, if sites don't shut, nothing changes in my life. sure. Yeah, it's as simple as that. Like, if I can get to play poker legally sitting in my home over here, Nothing and changes. if sites are taking certain hits and doing what they have to do in terms of to keep the ecosystem alive, I'm not going anywhere, bro. It's as Got simple it. as that. Like I don't care. Like this, like our government is I don't think it's doing a great job. Like I don't think they see the potential to like such kind of things. Hopefully in the future they will. Yeah, But irrespective of what they do or what decisions they make, uh, bro, I don't think anyone can control my life 100%. They can control my life to these kind of things, right? Where they can put restrictions, right? I will figure out a way. I have enough people around me who are extremely high IQ, who are extremely smart, who have a hmm. lot of experience in this field of the gaming industry. And I am extremely grateful to have them around me. And I will take all my support, like all the support that I can from them to understand what the situation is and do what is to be like done. You know what I mean? Like if I have to probably think of moving out of the country and going somewhere else and playing online or doing I don't know how, bro, but like whatever ways, Sure. like I'm pretty sure like a lot of people will come together and come up with ideas. So yeah, bro, like see how things go. Right now my only bro, like I mean, think about it, man. Like the GST thing happened and Bazi has just gone with goat. ठीक Yeah. है. They've just gone with goat और goat मतलब जो 11 का टूर्नामेंट था वो इतना मतलब उन्होंने 5,500 कर दिया ब्रो. उन्होंने बोला लो Correct. भाई. हाँ, लो I भाई agree. तुम लोग Yeah. पोकर छोड़ने की बात कर रहे हो ना. क्या छोड़ने की बात कर रहे हो भाई. अब तो 3 CR 2 CR कहाँ जाओगे छोड़ के पोकर भाई. सही बात है. Absolutely, समझ रहे हो. absolutely. Like bro, so if they are going to give us this kind of hope, then it is only fair that we don't lose hope, bro. Sure. Because if we as players and if, as an ecosystem, if we start shrinking and if we start losing hope, then bro उन लोग का बेचारों लोग का मेहनत तो मतलब कुछ काम का ही नहीं ना. अभी देखो पॉकेट 52 ब्रो, द अमाउंट ऑफ सीरीज मतलब जैसे उन लोग कर रहे हैं, it's just like crazy, bro. Like they are giving us so much. Now if all they want from us is that we don't lose hope, right? We try and stick in the ecosystem. Don't shrink, like try and keep yourself alive in the ecosystem. Bro, if we don't do that from our side, then उन लोग क्या ही करेंगे bro उसके आगे. Correct. राइट. अगर समझो 1 अक्टूबर के बाद हमने सारे जो प्रोफेशनल्स है उसमें से 90 टक्कों ने डिसाइड कर लिया कि भाई खेलना ही नहीं बस हो गया, तो ऐसा नहीं तो चलेगा ना. फिर तुम नहीं. कैसे लाइव रखोगे इकोसिस्टम को. Correct. राइट. हाँ गेम्स विल बिकम अ लिटिल मोर टफर ब्रो बिकॉज़ आई विल बी प्लेइंग मोर अगेंस्ट रेक्स, बट दैट इज द फन ना यार. छोड़ो ना भाई. ठीक है मतलब लोगों का पैसा खाना है. ठीक है आई नो इट्स अ ब्रूटल बिजनेस. हाँ मतलब यू हैव टू प्ले अगेंस्ट फिशेस ओनली. बट ठीक है ब्रो, अगर वो नहीं हो सकता तो क्या होगा फिर. तो मेरे को सूद के अगेंस्ट ही खेलना पड़ेगा ना ब्रो हर रोज.
पर आप तो चाहते थे कि सूट जीते हर एक टूर्नामेंट। हाँ, लेकिन फिर जब मैं उसके साथ खेलूंगा मैं नहीं चाहूंगा ना ब्रो, मैं तो 3 अच्छा, करे जाऊंगा ना ब्रो। got it, समझ रहे got हो it, ना? got it. If that is the way it's going to work, then that is the way it's going to work. Simple as that. I'm not going to stop playing this game unless and until I really there is no other way left, bro. Like there is no choice but to not play this game anymore. Sure. You know, like if that is the last, हाँ मतलब ब्रो कोई है ही नहीं इलाज उपाय, अभी खत्म ही हो गया कि समझो I साइट्स don't ने, think so. We're heading to that. Yeah, I don't think so. We're heading to yeah, that. yeah. Like let's say if sites all of a sudden decide that now we're not taking the hit anymore, you all have to pay full GST, bro. Then it's like khatam, Correct. right? फिर मतलब bro, yeah. Then bro, मतलब I will shed some tears, you know, Yeah, the ecosystem. Yeah. and figure out what I have to do. Unfortunately, I won't be able to play any more online poker on in Indian sites, you know, and figure out then how I have to move forward, bro. You know, and I'm pretty sure they're going to be hundred of ways. You know, they're not. It's not Yeah, that there you will know. be. There will be. I'm sure Yeah, there will be but this I thing. really hope that it doesn't reach Yeah. that point where No, I think the sites have done a good job. Like you mentioned, the 10 CR event and the other yeah, you yeah, mentioned sites are doing this. More sites are coming out with more this thing. So they're not showing signs of like falling as such, yeah, except of course, exactly, but there exactly. are tournaments coming up. So सही है, काफी Yeah, बढ़िया चीज है. But Pratik, yeah. man, मजा आया. I think we spoke Thank like you, bro. at Thank you so length much. and we spoke beautiful stuff. And Yeah. moreover, I think आपका perspective हर एक पे is very much there, and you have a point on all of these things which is very relevant. मजा आया वो सब सुन के, man. Thank you so much, भाई. Thank you, bro. Thank you so much, man. Thank you for having me over. It's like it means a lot to me, to be very honest. Like to come out here and like talk to people. Tell them also who I am. As a person, because because of the sport being an individual sport, हम सब और online poker खेलते हैं. तो तो घर पे lonely हो बैठे जाता है. Yeah. like we don't know each other, right? So this is one way. I'm grateful that this score came, and now I got this opportunity to do a podcast with you, and I'm really, really grateful Arey, to you, thanks, man. man. Thank you so much, man. Thank you. And I hope this. I just hope it influences people in a good way. Like I hope people see where I'm coming from in terms of what impact I want to make, because I'm just here to make a good impact on people. I want to help in any way I can. Of course, you don't go out of line to ask me for help. But like in any way I can, whatever I can do, I'm always here. So, thank you, man. Thank you so much, bro. Thank you. Thanks, man. Super. It just I have to say that you come like very clean heart, say, man. It's always nice to hear. Thank क्योंकि you. ऐसा नहीं है कि there's not like diplomacy or in the answers or anything. It's a very clean place you come from. सही है यार. Thank you so much, man. Thank you, man. Yeah. Thank you. And sorry, man. Like before, like we go, just like one thing, I want to बोलो ना. like just one small message I want to pass on to like everyone. Like for me, like the importance of calling this game a sport. I think the importance of acting on it as a sport is way more important. So I have been a professional sports person, and trust me, it takes a lot of sacrifice to, be a professional sports person. And if you really call yourself a professional poker player, sports person, don't shy away from making sacrifices. They will be tough in the beginning, but eventually they will bear fruit. You will be happy with the sacrifices that you make. Because in sport, if you don't make sacrifices and if you want to have everything your way, you're not going to go anywhere. You're just going to be stuck. No growth is going to happen. So yeah, man, like if you consider poker as a sport, treat it as a sport, go work out, go do your shit, eat well, eat your meals well, study, studying is theek bro. That is one theory part that you might not be able to do every day. But these things like eating well, working out, meditating, these are things that, you need to invest in yourself. If you don't, uh, it's going to be very hard to sustain any sport, not only poker, any sport, So yeah, man, that was like a last message from my end, like, to everyone like who's watching this. Yeah. सही है. Thank you so much, Pratik.